Hello, dear learners. I hope you are doing good. In this lecture, we are going to study a very interesting and an important topic for our class 12, that is osmotic pressure and reverse osmosis. Here's a brief introduction about me. My name is Diksha Jain and I am a BTech graduate from NIT Kurukshetra, and I have been mentoring students since 2020. Now, before I begin with the topic, let me ask you some very basic questions. You see that in our homes, we keep pickles for a few months and it doesn't spoil. And similarly, in the hospitals, you have seen that 0.9% saline is used in place of pure water. So, why do these things happen? Do they have some common relation? We'll see further in our lecture. Students, fasten your seat belts and get ready to dive in the amazing world of osmosis with me. Here are some basic terms we should know before proceeding further. And one such term is our colligative property. So, what is a colligative property? These are the properties which depends on the size, no, on the color, no, on the shape, no. These are the properties which depends only on the number of our solute particles. Irrespective of कि वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, उससे कोई डिपेंड नहीं करता. बस the number of solute particles defines our colligative properties. And you know कि number of particles को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? या moles. तो बेसिकली मैं क्या कह सकती हूँ कि it are the properties which depends only on the moles of a particle. And ये आपकी चार टाइप की होती है. कौन कौन सी? Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and your osmotic pressure. In this lecture, we are going to deal exclusively with the osmotic pressure. Now you have seen some basic terms, and this word diffusion you might have studied in your previous classes as well. Let's quickly recap. So, you know what are the terms concentration is? Concentration is a term we use to define specifically for a solute. So, whenever I say कि a particle is having higher concentration means कि उसमें solute के number of particles ज़्यादा है comparatively to your solvent. So, we take two solutions, one having higher concentration and other having lower concentration. Now we know that particles always move from their higher concentration to their lower concentration. So since C1 is having higher, so the particles will move from the C1 to C2. And this phenomena is called as your diffusion. Let's quickly get back to your osmosis. अब देखिए डिफ्यूजन में हमने क्या देखा कि मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है. मींस कि सॉल्वेंट का भी मूवमेंट हो रहा है और सॉल्यूट का भी मूवमेंट हो रहा है. बट व्हाट डिफर्स इट फ्रॉम ओस्मोसिस कि ओस्मोसिस में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं. अब सेमी परमिएबल मींस कि कुछ आधा, सेमी मींस समथिंग पार्शियल. तो कुछ चीज को जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगा पास होने के लिए एंड कुछ चीज को नहीं करेगा. तो वी नो दैट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज देन आर सोल्यूट पार्टिकल्स. तो इस फिनोमेना में क्या होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो तो पास कर जाते हैं एक कंसंट्रेशन से दूसरी में, बट नॉट योर सोल्यूट पार्टिकल्स. Since C1 is having higher concentration of solute particles, so obviously C2 will be having higher concentration of your solvent. क्यों? Because it has lower concentration of solute particles. तो अब क्या होगा कि higher concentration of solvent किस में है? C2 में and lower C1 में. तो particles कहाँ से कहाँ move करेंगे solvent के? Yeah, from C2 to your C1. और इसी phenomena को हम क्या कहते हैं? Osmosis. तो एक चीज याद रखिएगा कि डिफ्यूजन जो होता है हम बेसिकली सॉल्यूट के मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, और ओस्मोसिस होता है वो हम सॉल्वेंट के मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए करते हैं यूज.
Now what we have seen, that solvent is moving from C2 to C1, and if I keep the setup in an open atmosphere, then an atmospheric pressure PA will be acting on the both sides. अब मैं क्या करती हूँ, I apply an external pressure on the C1 side to counter the concentration difference of the solvent. Now I keep on increasing this pressure slowly. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि the value of my pressure applied, that external pressure applied, will counter or balance the concentration difference of the solvent, और उसके कारण क्या होगा कि जो मेरा solvent का movement है from C2 to C1 will stop. तो वो जो minimum pressure value है that I have applied is known as the osmotic pressure. So we can define osmotic pressure as the minimum value of pressure applied to stop the movement of solvent from C2 to C1, or you can say to stop the process of osmosis, is known as your osmotic pressure. Now here comes the derivation of osmotic pressure. It's very easy to understand. We have studied the gas laws in our previous class. So one such law is your ideal gas law, which says that PV is equals to nRT, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas or the beaker in which it is kept, N is the number of moles, R is your universal gas constant, and T is the temperature. So in case of osmotic pressure, we denote pressure by the symbol of a pi, this symbol, and V and nRT will remain as it is. Now if you see, if I just move this volume on the right hand side, now what it will become? It will become your N by V, and we know that the number of moles upon the volume of the solution, what it is known as? Yeah, it is known as your molarity. So what it we can call it as C, molarity, or we can denote it by C. So what it becomes, that pi is equals to CRT, and this becomes your osmotic pressure. Okay. Now, if we compare the osmotic pressure with the concentration, we will get a straight line with a slope of RT, because pi is equals to CRT. And if we extrapolate that C is equals to 0, means it will be having a infinite dilution, because C is equals to 0 means solute particles concentration is 0. So it will tell that how the solute particles will behave ideally, whether they will stick together, they will associate or dissociate. Now comes a very common phenomena, that is reverse osmosis. सब अपने घर में क्या पीते हैं? केंटारो का शुद्ध पानी. तो let's now see that how this works. अभी तक हमने क्या समझा? Osmosis समझा, means the movement of solvent particles. अब now we will see the term reverse osmosis. Now see, when we applied an external pressure that was osmotic pressure, तब क्या हुआ था कि जो आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट था वो क्या हुआ था? स्टॉप हो गया था. नाउ व्हाट इफ आई से कि मैं उस प्रेशर को और इंक्रीज कर देती हूँ, मींस मैं उस एक्सटर्नल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देती हूँ, तो क्या होगा? द प्रेशर ऑन द C1 साइड विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन C2 साइड. तो अब क्या होगा? द सॉल्वेंट पार्टिकल, सिंस इट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज देयर, तो मोमेंट क्या होगा? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होगा. तो अब क्या होगा? अब जो मेरी सॉल्वेंट कंसंट्रेशन C1 साइड पे है, दैट विल बी मोर ड्यू टू द हायर प्रेशर, और अब ड्यू टू दिस द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम द C1 टू C2, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस.
means if we apply a pressure higher than the osmotic pressure, then the movement of the solvent particles will reverse itself and now it will move from C1 to C2. That will be called as a reverse osmosis. तो अब देखिए, अब मेरे C1 साइड पे क्या था, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा थे, मींस कि जो मेरी इम्प्योरिटीज और जो सॉल्ट प्रेजेंट थे मेरे सॉल्यूशन में वो ज्यादा थे। तो अब क्या होगा कि वहां से जो सॉल्वेंट है, मींस इन केस ऑफ आर वाटर, तो वो जो वाटर है वो मूव कर जाएगा टू द लेस सॉल्यूट साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर। एंड दैट्स हाउ आर आरओ इन द हाउस वर्क्स। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा तो आई सपोज कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल द वर्किंग ऑफ एन आरओ इन योर होम्स। सो दीज आर सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ osmosis. Osmosis हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वेदर इन द फील्ड ऑफ योर मेडिकल, बायोलॉजी और योर इंडस्ट्री जो कि हमने देख लिया आरओ, और योर फूड प्रिजर्वेशन जबकि हम यूज करते हैं इन द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर फूड्स। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में जाके या तो कई बार एसोसिएट कर जाते हैं, मीन्स कि दो पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल पार्टिकल, मीन्स दे स्टिक टुगेदर। और कई बार क्या होता है कि वो आयंस में टूट के क्या हो जाते हैं, दो पार्टिकल या फिर दो से ज्यादा पार्टिकल्स बन जाते हैं, मीन्स दे डिसोशिएट। फॉर एग्जाम्पल टेक योर NaCl, योर रॉक सॉल्ट। NaCl क्या होगा कि इफ यू डिसॉल्व इट इन वाटर, इट विल ब्रेक इनटू योर Na+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो अब हमने डाला तो 1 मोल NaCl था, बट ड्यू टू डिसोसिएशन व्हाट इट फॉर्म्ड 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, तो मीन्स कंबाइंड टू फॉर्म 2 मोल। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ योर सोल्यूट पार्टिकल्स। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण हमारा कैलकुलेशन एरर आ सकता है। क्यों? बिकॉज वी कंसिडर्ड कि हमने तो 1 मोल NaCl यूज किया, तो हम उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, बट जो ऑब्जर्व हुआ है मीन्स जो रियल है वो कितना हुआ है, 2 मोल। तो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए वी यूज अ वेंट हॉफ फैक्टर, और इसको हम कैसे देखते हैं, that is your observed colligative property upon your calculative colligative property, or we can just say कि number of solute particles after dissociation upon the number of solute particles before dissociation, और इसका रिवर्स होता है the association, means the formation of dimers or trimers, कि अगर आपने 2 मोल सोल्यूट डाले हैं बट they combined, for example acetic acid in benzene, it combine 2 mole of acetic acid combines to form a dimer and it forms a single mole, so that is known as your Van't Hoff factor. Let's take a numerical now. The question says we have to find the osmotic pressure of a 0.2 molar, that's your concentration, of a potassium sulfate, that is K2SO4, and that will be your solute in a temperature of 27 degrees Celsius. So K2SO4, as I have told before, कि कुछ solute ऐसे होते हैं जो कि dissociation undergo करते हैं, तो same is the case K2SO, और since here it is not mentioned, so we assume that it is 100% dissociating. So K2SO4 will break into K positive ions and sulfate, that is SO4 2 negative ions. 1 mole will break into 2 K positive and 1 SO4 2 negative. तो टोटल यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हुए आपके, 3 मोल्स, और इनिशियल कितना था, 1 मोल. सो I, that is your Van't Hoff factor, will be 3/1, that will be 3. Now we have concentration that is 0.2 molar and your temperature, इसमें अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो that will be in Kelvin and it will become 300 Kelvin. अब हमारे पास R की मल्टीपल वैल्यूज होती है डिपेंडिंग ऑन द
प्रेशर हम डिसाइड करते हैं। अगर हमें अगर हमें प्रेशर एटीएम में चाहिए होता है तो व्हाट वैल्यू वी यूज, या 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, और यही अगर हमें पास्कल में चाहिए हो तो 8.314. Yeah. Now the formula is pi is equals to ICRT. Put in the values. तो हम क्या देखते हैं कि एक चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग हाउ यू कैन जस्ट एलिमिनेट विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शंस. सी द ऑप्शंस आर 5, 10, 15 and 25. And what I am going to multiply कि 3 into your something. तो अब जो भी मेरा आंसर आएगा that answer should be a multiple of 3. क्यों? क्योंकि मैं अल्टीमेटली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपने ऑप्शन से चेक कर लूँ कि जो ऑप्शन मेरा 3 का मल्टीपल होगा that will be the answer. और मुझे पता है कि 15 is the only option which is a multiple of 3. तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आने वाला है? 15. Another way you can check is कि since the difference in the option is too much, तो what we can do कि हम सबके whole digits को multiply कर लेते हैं, like 3, 2, 8 और आपका again 3. तो 8 3 जा 24 and 3 into 2 is 6. तो 24 into 6 is something like 144, and approximating with the help of decimal it should be 144 point something, and the option nearer to this is 15. So both ways you can solve the answer without actual calculating. अब मैंने आपको एक और न्यूमेरिकल दिया है that you can practice on your own, and solution is also provided. Now I think कि you must have got the answer from where we started. कि अब आपसे कोई पूछेगा कि why the RBCs burst in pure water and just thrive in the saline. So now you can answer. Everywhere you see the RO bottles, I think that you will feel that the osmotic pressure is in our real life. Thank you, students.